So we are now moving to the third point as we had discussed in our previous video, that is the making law. So making law is one of the decisive role which every political party plays after winning the election and becoming the member of legislative assembly. So most of the members in the legislature belongs to these political parties and they play important role. Third point you have to remember, both the ruling party and the opposition parties elected representatives, they play important role in lawmaking. And last one is, so making law is very important for the smooth running of a state or a country. If we want to run our system in a smooth manner, then we require laws, and these laws are made by the political parties. I hope you understood this point. Fourth one is form and run the government. इसको मैंने एक ऑप्शन में और लिखा है, रोल ऑफ अ रूलिंग पार्टी. दोनों का सेम ही मीनिंग है. So what we have written here, the first point is every political party contest election and try to win the election. Try to win the election and form the government. अब लड़ती अगर एक इलेक्शन में 10 पार्टीज लड़ रही हैं तो सभी नहीं जीतती. Only second point states the party which gets the majority. So the party which gets the majority will form the government, and that party will be called ruling party, which gets the majority and now in a position to run the state or country. There's a third point. Now it gets the power to run the state or run the country for the next 5 years or 6 years. जिस देश का जैसा सिस्टम है उसके हिसाब से उसको अपना टेन्योर पूरा करना होता है. And during this time period of 5 or 6 years, this ruling party will try to implement all the policies and programs, all these programs and policies. They will implement whatever promises they have made. We have discussed now, every political party has some programs and policies, and they put forward these programs before the people. And when on the basis of these programs they get the support of the people, then what will happen? They will get the majority. और मेजॉरिटी में आने के बाद वो फिर सरकार चलाएंगे और फिर क्या करेंगे? जिन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज का सपना उन्होंने लोगों को दिखाया है, they will try to implement all these programs and policies which in a form of promises they have made with the people and try to make the life of the people better. So this is the role of the ruling party. I hope you also understood this point. Now we are going to cover the next point. That is the point number 5. और मैं इसको रब करके इसको जल्दी से यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को. और that is just like role of ruling party. What we are going to do, we are going to cover role of opposition. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड. और ये इंडिविजुअली ये वाला पॉइंट आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन? तो आप पहले लिखेंगे ऑपोजिशन ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी. तो आप लिख सकते हैं द सक्सेस of our democracy depends on active role played by opposition. So अगर किसी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली काम करना है तो ऑपोजिशन को अपना रोल एक्टिवली प्ले करना बहुत जरूरी है. तो व्हाट आर द वेरियस रोल्स प्लेड बाय द this opposition party? You can now give the point number 2 here. They raise the voices and problems of people. This is the next point. The opposition, what it will do? What the opposition will do? They will raise the problems of the people, problems of their day-to-day life. Or at the same time, you will then further explain. They will
criticize wrong policies and decisions of whom? Of the government. So whatever wrong policy has been taken, adopted by the government, whatever wrong decisions they have taken, they will be severely criticized by this opposition party or parties. मैं अगला पॉइंट सिर्फ ऐसे लिखता हूं, एक्सपोज करप्शन एंड वीकनेसेस, corruptions and weaknesses again whom? Again the ruling party. They will expose the weakness of the ruling party of the government, will expose the corruption in which the ministers or the head of the government they are get involved, and in this way they try to make the space in the hearts of the people so that in next election they can get the power, get the chance again. So लास्ट में मैं एक और हेडिंग लिख रहा हूं, आप इसको भी लिखेंगे, कीप अ चेक ऑन गवर्नमेंट. ये आप इसको हेडिंग के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये अलग से सेपरेटली एक क्वेश्चन की फॉर्म में आता है. अदरवाइज यू कैन जस्ट मेक अ सिंपल लाइन एंड कैन एक्सप्लेन इट कि ऑपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, अदरवाइज द गवर्नमेंट मे बिहेव लाइक अ डिक्टेटर. अगर कोई उसको अपोज करने वाला नहीं होगा लेजिस्लेचर असेंबली में, विधानसभा और लोकसभा में, then they can behave like dictator. So weak opposition is a signal of weak democracy and strong opposition is a sign of good democracy or healthy democracy. I hope you understood this point also. Now quickly we are moving to the next point, that is also equally important. Mold public opinion. So this is the next point, and like role of opposition, this point is also very important. 2-3 times this point has come in the form of short question of 3 marks, तो आपको इसको भी special attention देनी है. Mold public opinion. Mold means influence public opinion, change public opinion. So these political parties at the same time mold the public opinion. So this is your introductory line. मैंने इसमें सिर्फ हेडिंग लिख दी ए में, one of the important function of PP political party is to mold public opinion. To whom favor? आप ही बताएंगे किसकी फेवर में पब्लिक की ओपिनियन को मोल्ड करेंगे. टू या इन फेवर ऑफ, इन देयर फेवर, अपने फेवर में, अपनी साइड में, इन देयर साइड दे वांट टू चेंज द पब्लिक ओपिनियन. क्योंकि वो इस बार हारे हैं तो अगली बार पूरा एफर्ट करेंगे कि वो पावर में आए, एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव टू मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन. एंड हाउ दे विल मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन, चेंज द public opinion? By raising public issues or public problems, issues and problems. They will raise the problems of the people, common people. Their issues would be raised, and आप इसको correlate कर सकते हैं. आप सोचिए आपके शहर में, आपके स्टेट में, विच इज द रूलिंग पार्टी एंड विच इज इन ऑपोजिशन, एंड द ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज इन विच दे आर ट्राइंग टू रेज द पब्लिक इश्यूज सो दैट दे कैन गेट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक. अब अगला आपने बताया, मैंने आपसे पहला पॉइंट बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे रूलिंग हो या ऑपोजिशन दोनों इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है. इवन द रूलिंग पार्टी ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू कीप द पब्लिक ओपिनियन इन देयर साइड. अगर वो इस बार आपके साथ हैं तो अगली बार भी आपको इलेक्शन लड़ना है तो वो उसके लिए भी रेडी रहेंगे.
और ऑपोजिशन जो है वो अपना डबल एफर्ट करेगी कि वो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करे अपनी फेवर में। अब ये कैसे करेंगे? हाउ दे कैन डू दैट? बाय रेजिंग द पब्लिक इश्यूज, बाय गिविंग देम एवरी सपोर्ट वेयर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। और नेक्स्ट जो है तरीका क्या होगा, किसकी हेल्प से वो पब्लिक की ओपिनियन को मोल्ड करेंगे? हाउ दे कैन मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन? बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, ठीक है, कॉमा, बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट मार्च। रिसेंटली प्रोटेस्ट मार्च गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं अलग अलग इशू के ऊपर, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। बाय डोर टू डोर कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन, और बाय टेकिंग हेल्प ऑफ मीडिया। So now the last point, that is point number 7, link between people and the government. Who is providing link between people and the government? That is political party. So this is the last point. Let me explain to you through this particular diagram. What I am doing, I am just showing you, suppose this is the common people of India and its population is 130 crore, और इन्हीं population में से various political parties are formed which have common ideology. Suppose this is a political party, I am naming it like BJP. Why BJP? Because currently this party is in a ruling position, not only in center but in our state as well. So this is a party, this party which is claiming that it has crores of members. पीछे पार्टी मेंबरशिप का जब इन्होंने कैंपेन चलाया तो द पार्टी प्रेसिडेंट क्लेम दैट कि दे हैव द मेंबर मोर देन 5 करोड़। तो दिस इज द पार्टी, इट हैज बीन अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पीपल्स। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको मैंने यहां पे लिख दिया, सपोज एक मोटा फिगर लेते हैं 5 करोड़ जो ये क्लेम करते हैं। हम मान लीजिए इसको, सपोज हम इसको 1 करोड़ भी करते हैं कि 1 करोड़ इज देयर. They are the members of, active members of this political party. Now this party is contesting election in almost every state, and in 2019 this party came in power in the center. So this is the government. This is government, like one head of the government, PM, and his ministers, cabinet. तो ये जो है वो मिलके एक गवर्नमेंट बना रही है. अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, हाउ इट इज लिंकिंग और सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. ये पार्टी, इसी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, तो दिस इज इन अ रूलिंग पार्टी पोजीशन, और यही पार्टी की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे विल रन द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 years. So now what's going on, how this party is, yeah, any political party serves as a link between people and government. What they will do, the political party will tell the policies of its government to the people. So whatever the policies are made by the government for welfare of people, गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी बताएगी और उसके जितने मेंबर्स हैं वो सारी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को कॉमन पीपल के पास लेके जाएंगे. इन द सेम वे व्हाट द कॉमन पीपल आर थिंकिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, उनके हिसाब से गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या बुरा, तो वो जो पल्स ऑफ पीपल है, पीपल का मूड, कॉमन पीपल का मूड, वो कौन बताएगा गवर्नमेंट को कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क or they are satisfied and happy with your work. That will be again told by the party, the members of the political party. तो अब आप देखिए कि the government's policies and programs, they are taken to the people. The government's intention, government का इरादा क्या है, कैसे काम करना चाहती है, whatever the government is doing, that will be told to the common people by the members of political party. And in the same way, what the people are thinking about the government, the feedback of the people, that will be taken by the members of political party and then they will take it to the government. तो ये साइकिल चल रही है, ठीक है. So that is why political party serves as a link between people and the government.
Now we will explain this in proper points. The first point, political party, they serves as a link between the people and the government. So they provide a link between the people and the government. Second one, they tell people about the various programs and policies of the government for the welfare of the people, and at the same time they will tell the government about the feedback of these programs and policies made by the government of common people. So they will tell the government about the opinion of the people about the government's functioning, working. So in this way they are serving as a bridge. तो ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं जो लोगों के मूड को इधर गवर्नमेंट तक लेके जा रहा है और गवर्नमेंट के फंक्शन को यहां कॉमन पीपल तक लेकर आ रहा है. So I hope you have understood this point. With this topic has been covered, functions of political parties.